Good morning, guys. Welcome back to my channel. So today we are going to do equity valuation practical part. In theory, there is nothing much to be covered, and I believe this is something that can be done by yourself, especially when exams are approaching and they are so near. Okay. Before I move on forward, I will literally request you to press the subscribe button and the like. I'm not asking for any sort of money, so please go and subscribe to my channel. Recently, I saw my analytics and it was 95% of the viewers don't subscribe to my channel. It's actually very demotivating to see such kind of percentage when you put on so much of hard work into, these videos. Finally, moving on to the chapter. This is the most important formula that we will be using throughout our chapter. So I would literally request you to write down this formula in front of you because we will be using this particular formula again and again. Okay? This is the Gordon's model. Now, if you have done the bond valuation before this particular chapter, you must be aware that annuity factor कब use होता है and present value factor कब use होता है. ठीक है? तो keep that particular thing in mind कि अगर कांस्टेंट कैश फ्लोज है तो सारे कैश फ्लोज को आज की वैल्यू में लाने के लिए यूजर एन्युटी फैक्टर. बट अगर तुम्हारे कैश फ्लोज अलग अलग है तो यू कैन नॉट जस्ट यूज द सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दैट इज एन एन्युटी फैक्टर. इंस्टेड आपको हर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उनका सम करके आज की वैल्यू आएगी. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ द एन्युटी एंड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KE, that is the cost of equity, and the required rate of return? It is one and the same thing. Now see, this is the company and this is the investor. When I am talking about the company's perspective, I am saying the cost of equity, that is the return that I'm providing on the capital is a cost to a company, so that is the cost to equity. But when I'm talking about the investor's perspective, I am talking about the required rate of return. This is the minimum return that an investor required as a return on their investment. ठीक है, so do not get confused with the question अलग-अलग पूछ के. This is the same thing. Recently, I got a mail that they don't understand, few students don't understand the abbreviations that I used. So these are the abbreviations that I will be using throughout my video. I would literally request you to go through it once. Second, मैं बोलती भी जाऊंगी when I am writing, but in case there is any issue, you can just refer to this particular slide. Now let's move on to the first question quickly. In this particular video, we will cover 10 questions, and in the next video we will be covering the next 10 questions. In all, we will do 20 questions of this particular unit, and I believe these much questions are enough for the exam purpose. You need to just know the concept, you just need to know the formulas that needs to be used. Okay, a firm paid a dividend. Okay, dividend kitna hai? Dividend is 8 per share and the face value is 10. The dividend is expected to grow at 5%. The company belongs to a risk group for which equity capitalization is, बहुत fancy word use करें, but it is nothing but the cost of equity. ठीक है? Now I need to find out the value of share. I'll try my best to improve my handwriting as requested by a few of you. Value of share. कैसे निकालूं? I will use simple formula D0 1 plus D upon KE minus D. Guys, इसमें ना बुक कभी तुम्हें D1 बोलेगा, ठीक है? तो बेसिक फंडा क्या होता है? D1 and D0 into 1 plus D is make a timeline in your mind. तुम जहाँ खड़े हो, ठीक है? And if I add the growth rate, you will reach here. So D0 is here and D1 is here. Now, value of share would be 8 into 1 plus 5% KE minus G. Instead of percentage, just write the decimals अगर paper में आ रहा तो.
ठीक है, और यू कैन राइट द परसेंटेज टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ शेयर। इफ आई वांट टू कैलकुलेट, दिस इज द बेसिक फंडा। नाउ would the value be different if the risk was 15%? अगर रिस्क 15% होता तो मेरी वैल्यू ज्यादा होती या कम होती? वी विल फाइंड इट। कैसे? इंस्टेड ऑफ पुटिंग KE as 12%, आई कैन सिंपली पुट 15% इन द सेम फॉर्मूला। तो जो यहाँ पे मैंने 12% डाला है, आई कैन सिंपली पुट 15% in order to find out the value. Let's check कि ठीक किया भी या नहीं किया। See 8.40। अब देखो इसने क्या किया है, इसने तुम्हारा D1 लिखा है। D1 ज्यादा इंटेलिजेंट मत करो, इसे ऐसे ही लिखो। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट 8 प्लस 1 12% माइनस 5%। ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट क्या किया, KE को मैंने 12% की जगह 15% कर दिया। ठीक है, now let's move on to the second question. Equity shares of Badapur Gas Limited is currently selling at ₹60. The value of share has been given to me, 60 rupees. Dividend is 3 after 1 year. Now you are standing here. मैंने D0 into 1 plus G जब किया था because मुझे D1 पे जाना था, right? But यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बता दिया कि आफ्टर 1 ईयर इट इज 3. सो विल आई एक्चुअली डू 1 plus G? नो. अगर मैं 1 plus G करूंगी तो मैं D2 पे पहुंच जाऊंगी. ठीक है, एंड आई हैव टू गो हियर. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल सिंपली यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू. आई विल नॉट डू 1 plus G. तो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू D1 upon KE minus D. I have to find out KE. ठीक है, the growth rate is 8%. I can simply put on the values. 60 is equal to D1, that is 3. KE minus 8%. I will be able to find out my KE. See, इसने भी यही किया. P0 is equal to this. मतलब value of share is equal to D1 upon KE minus G. अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने D1 इसलिए यूज किया बिकॉज मुझे 1 ईयर के बाद का डिविडेंड गिवन था. अगर मुझे आज का डिविडेंड गिवन होता, ग्रोथ रेट गिवन होता, तो मैं D0 1 plus G ही करती. ठीक है, KE minus G क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा भी 3/60 ही आएगा आई गेस, राइट? अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/60 plus 8%, this will come out to be 13%. Now let's move on to the third question. A firm has paid dividend to last year. तो मैं D0 पे खड़ी हूँ, तो मुझे पिछले साल मिला था. मुझे क्या चाहिए होता है, D1, right? The estimated growth of the dividends from the company is 5%. 5% is the growth rate. तो मैं यहाँ पे आऊँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2.1. कैसे? 2 into 1 plus 5%, right? 2 into 1.05. This is 2.1, right? Now, determine the market price. मुझे market price निकालना है. Required rate of return is 15.5%. What will be the, first of all, first requirement is market price at the rate of this particular thing. जब मेरा ग्रोथ रेट 5% है, तब मेरा मार्केट प्राइस कितना है? ठीक है, तो आई विल डू 2 into 1 plus 5% divided by 15.5 minus 5%. ठीक है, ये कौन सा आ गया डिविडेंड, ये वाला. तो 2.1 पे this will come out to be, let's check. See, इसने भी ये किया,
D0 1 plus D upon KE minus D. कितना आया 20. Now it is telling me कि अगर estimated price निकालो, growth rate rise हो गया 8% से, तो 2 into 1 plus 8% upon 15.5% minus 8%. Was it very difficult to solve? यही किया होगा. D0 into 1 plus D upon KE minus G. तो D0 की जगह he has put on 2 into 1 plus 8% divided by 15% minus 8%. Sorry, 15.5% minus 8%. This will come out to be 28.80. Understood? Now let's move on to the fourth question. The current market price is 65 and it is expected to be 90 after 1 year. मतलब आज अगर सेलिंग प्राइस इसका 65 है तो 90 इसका एक साल बाद होने वाला है. ओके. Dividend expected after 1 year from now is 2.90. Find out the equity capitalization rate. मुझे KE निकालना है. Okay, we will do this question very logically. ठीक है, कैसे करेंगे? Equity capitalization rate is nothing but the return on my investment, right? तो return मैं कैसे निकालूं? Return मुझे दो फॉर्म में मिल सकता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को. कैसे मिल सकता है? एक तो तुम्हारा कैपिटल ग्रोथ हो गई, तो मेरी कैपिटल ग्रोथ कितनी हो गई 25, 90 माइनस 65 प्लस मेरी डिविडेंड ग्रोथ. मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था 65. So if I calculate this will come out to be 42.9%. This is the KE. 42.9%. See, इसने यहाँ पे एक नया ही फॉर्मूला बना दिया है. चलो इसके फॉर्मूले को थोड़ा देखते हैं किसने करा क्या है. Let's try to understand what he has done. देखो, इसने लिखा है P0 is equal to D1 plus P1 1 plus KE. I have to find out KE, right? तो 1 plus KE क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ये ठीक है, इसे मैं नीचे लेके जाती हूँ, राइट? ओके, लेट्स डू वन थिंग. इसे एक साथ ही नीचे लेके जाते हैं. तो D1 plus P1 डिवाइडेड बाई P0. KE क्या आ गया? D1 plus P1 P0 minus 1. If I just solve this, तो क्या आ रहा है? तो मैंने क्या लिखा था? This is the dividend income. This is the capital appreciation upon initial investment is equal to KE. What did we write? Return is equal to dividend plus, capital appreciation plus dividend upon the initial investment is equal to return. So they have made a new formula. तो उसे करने की कोई जरूरत नहीं है. Just stick to the basics, stick to the concept. ये हमने सेम थिंग होल्डिंग पीरियड रिटर्न में भी पढ़ी थी कि कुछ नहीं होता, जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है या आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है divided by what you have actually invested, that is the purchase price into 100 is the return. ठीक है. Now let's move on to the fifth question. A firm is currently paying a dividend of 2 per share. The rate of dividend is expected to grow 5% for 5 years and 10% thereafter. Okay. Find the value of the share if the required rate of return is 15%. This is very important question. ठीक है, and ऐसे ही question I believe exam में आएगा. See, this is the years. तो 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, these are my cash flows. What are my cash flows? First year I will be earning 2 plus 5%.
दैट इज डिविडेंड में थोड़ी सी 5% की ग्रोथ. 2.1. 10 plus 5%. This is the cash flow for second year. Plus 5%. This is the cash flow for second year, third year. Plus 5%. This is the cash flow for fourth year. Plus 5%. ठीक है. Now what I will do? I will discount them. At what rate? 15%. तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर मुझे कैलकुलेटर पे निकालना है तो आई विल डू 1 डिवाइडेड बाय 1.15. दिस विल कम आउट टू बी 0.869 इक्वल्स टू दबाएंगे एक्चुअली मेरे कैलकुलेटर पे आ नहीं रहा बट इक्वल्स टू 2 दबाएंगे तो वी विल गेट द वैल्यूज. ठीक है. वी विल राइट डाउन ऑल द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हियर. वी विल मल्टीप्लाई. ठीक है. and we'll do it sum. This is the value of 5 years, initial 5 years. तो वैल्यू अगर मैं 5 years की देखूं तो मेरे पास आ गई प्लस परपेचुइटी. परपेचुइटी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो इट इज कैश फ्लो अपॉन आर. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू इन द बॉन्ड वाला चैप्टर. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है. तो हम क्या करेंगे, कैश फ्लो में 1 प्लस डी अपॉन के ई माइनस जी कर देंगे. ठीक है. दिस इज द अगेन सेम फॉर्मूला. तो ये कैश फ्लो में कौन सा लू, 2.5. 1 प्लस 10%. के ई इज 15% minus 10%. Okay, you will get the value of perpetuity. But remember, this is the value of 5 years. See, 1, 2, 3, 4, 5. आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में लाके यहाँ पे आप वैल्यू ले आए हो. ठीक है. तो इट इज अ P0. बट अगर मैं इसके आगे की देखूं परपेचुइटी की, तो मैंने अभी सिर्फ वैल्यू ही निकाली है, मतलब मैं यहाँ ही खड़ी हूँ. राइट. मैंने कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज नहीं किया कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं. तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. देन ओनली आई कैन एड दीज पर्टिकुलर वैल्यूज. तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई विद द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. Which present value factor? The last in your table. That is for the 5th year. Understood? In case you haven't, please इसे वापस देख लो एक बार रिमाइंड करके. ठीक है. Okay, understood. In case you haven't, I will literally request you to go back and watch it again because ये बहुत ही ज़्यादा important question है. Let's check the answer. देखो, for the first year, what he has done, इसने dividends किया. Dividend में इसने 5% का growth rate किया. You got the cash flows. Then आपने present value factor 15% use करके you wrote down the present value factors, you multiplied it and you summed it up. Came out to be 7.69. But this is for the initial 5 years. ये वाले 5 सालों के लिए. ठीक है. और हम present value factor use कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ आ गई हूँ. अब मुझे इसके आगे का तो निकालना है. तो वो कैसे निकालूंगी, D0 1 plus D upon KE minus G. Again, cash flow into cash flow upon R वाला formula, right? अभी D0 की जगह मैं क्या यूज करूं, this is the last cash flow. G की जगह I am using 10%. Came out to be 2.81. KE minus G 27.88. Now see 27.88 कैसे आया, इसने पहले ये वाली वैल्यू, then he has multiplied with the present value factor, that is this particular factor, in order to reach here. So 27.88. तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट 7.69 प्लस 27.88. ठीक है. Now let's move on to the 6th question. We will do only 10 questions. Okay. Mr. Nanda wants to invest in a company that has just given a current dividend. मतलब आज dividend बांटा है 3 per share. Dividends are expected to grow 20% की रेट से
डिविडेंड ग्रो होने वाला है फॉर द 10 years 20% की उससे होने वाला है एंड परपेचुइटी से इट विल ग्रो 8%. Okay. I need to find the value of equity share if the required rate of return is 10%. Again, the same concept that you need to go. कैसे करोगे? Real 1 2 3 1 से लेके 10 तक. ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किसका लोगे? 10% का. दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ग्रोथ किस रेट से करोगे? इन डिविडेंड्स में कैश फ्लोस कैसे निकालोगे? 3 इंटू 20% से हो रही है 1 प्लस 20% 1 ईयर का आया. देन प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इंटू कैश फ्लो. तुम्हारे मल्टीपल्स आ गए. यू डिड सम. ये कौन सी वैल्यू आई है? दिस इज द वैल्यू फॉर 10 years, राइट? अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 years 1 से 10 एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज किया तो मैं यहां आ चुकी हूँ. अब मुझे इसके आगे की जर्नी भी देखनी है जो 8% पे ग्रो हो रही है. और परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैश फ्लो अपॉन आर. अब इसमें ग्रोथ है तो कैश फ्लो में this will become my formula, right? ये वाला डिविडेंड कौन सा लूंगी? जो 10th ईयर पे मेरा डिविडेंड आया होगा आफ्टर ग्रोथ कंसिडरेशन. ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने यहाँ यूज नहीं किया तो आई एम स्टैंडिंग हियर. आई नीड टू यूज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द 10th ईयर इन ऑर्डर टू रीच हियर. ठीक है. आई विल एड दीज टू वैल्यूज एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई इक्विटी शेयर. लेट्स सी इसने क्या किया है. सी 3 से 3 was my initial, right? If I'm not wrong, yes. 20 पे ग्रो हो रहा था तो 1 से लेके 10 तक इसने कैश फ्लोज निकाले. क्या निकाले? कैश फ्लोज. 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किया, राइट? दीज आर द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. मल्टीप्लाई किया एंड देन ऐड किया. This is the value that you got for the 10 years today, right? अब मुझे आगे की वैल्यूज निकालनी है. वो कैसे निकालूंगी? D0 1 plus G upon KE minus G. I am very sorry कुछ ज्यादा खराब हो गई. D0 1 plus G upon KE minus G. D0 क्या लूंगी? 18.57. G क्या लू? ग्रोथ रेट चेंज हो गया, 8% हो गया. के तो अभी भी 10% ही है, राइट? तो दिस केम आउट टू बी 20 point. I am standing now here. I need to use the present value factor 0.386 in order to reach here. I got this value, I got this value, I'll add it up and I got the value of equity share. Mr. Shukla wants to invest in a company that has just given a current dividend of 5 per share. Okay. तो टाइमलाइन बना लेते हैं. ठीक है. Dividends are expected to grow at 10% for 5 years. मतलब इन सालों में it will grow at 10%. For the next 3 years, it will grow at 3%. And after that, it will grow at 5%. Find the value of share if the required rate of return is 10%. Again, very easy. कैसे निकालोगे? सबसे पहले कैश फ्लोज. 5 plus 10%. This is coming out to be 5.5 for first year. Then 10% again, 6.05 plus 10%, 6.65 plus 10%, 7.32 plus 10%, 8.05. These are my 5 years dividend cash flows. Now I need to add 3% plus 3%. So 8.05 plus 3%, 8.29. I hope this is clear. अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करना है.
कौन सा यूज करूंगी? 10% वाला। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, सम कर दूंगी, क्या आ जाएगा मेरा? वैल्यू। बट ये वैल्यू कब की आएगी? दिस विल कम आउट टू बी फॉर 8 years, राइट? वैल्यू एट द एंड ऑफ 8 years. बट व्हेन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर का मुझे टोटल वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो मैं परपेचुइटी का भी निकालती हूँ। ठीक है, वो कैसे निकालूंगी? दिस इज नथिंग बट कैश फ्लो अपॉन आर। अब कैश फ्लो में अगर ग्रोथ है तो D0/1 + D/Ke - D। D0 कौन सा लूंगी? जो 8th ईयर का कैश फ्लो आएगा। जी क्या लूंगी? 3%। KE क्या लूंगी? 10%। जी क्या लूंगी? अगेन आई एम वेरी 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 सॉरी। ओके वेट। परपेचुइटी का कैसे निकलेगा? D0 × 1 + G। G इज 5% है। This 3% is for these 3 years. I'm sorry. KE is 10, GE would be 5%. तो टाइम लाइन में मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे जाना है यहाँ पर। क्या करूँ? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई। कौन सा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से? 8th वाले से। ठीक है, तो टोटल वैल्यू जब निकालने पे आऊंगी मैं दोनों ऐड करूंगी, बट इसने इंडिविजुअली 8th का भी पूछा। And when I will be comparing with actual market price, I have to compare the total value. Okay. Let's check out the solution. यही है ना? ठीक है। Now see, 8th हमारे भी यही आए थे डिविडेंड्स, I guess. Yes. सारे डिविडेंड्स लिखे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से क्या मल्टीप्लाई किया, you got it. This is for the 8th year, right? For 8 years. 8 years के बाद भी डिविडेंड्स मुझे मिल रहे हैं और वो ग्रो भी हो रहे हैं। तो कैसे निकालूंगी? D0 कैसे निकाला इसमें? D0 1 + D/Ke - G। D0 क्या है? 10.14। G क्या है मेरा? अगेन वेट, लेट मी चेक। 5%। ठीक है, KE is again 10 - 5%. I have to multiply with the present value factor in order to bring that value in today's term. I will add it and I will find the total value. Now this value has to be compared with 100 rupees. I will say I should definitely buy it because it is underpriced. अगर तुम्हें 138 की चीज 100 रुपए में मिल रही है तो तुम्हें इसे छट के एकदम कूद के ले लेनी चाहिए। ठीक है, now let's move on to the 8th question. Mr. Tiwari wants to invest in the share of PTL Limited having the current market price of 340. Okay. However, Mr. Pandey, a good friend of Mr. Tiwari, is suggesting him not to buy the shares. Okay, he thinks that the shares are overvalued. You are given that recently paid dividends 10 per share. The expected growth rate is 7%. The required rate of return is 10%. So I have to find out the value. ठीक है, तो ये फ्री का एडवाइस वाला फ्रेंड है जो एडवाइस देने आ गया है। अब इसकी एडवाइस सही है या नहीं है ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? हम मस्ट बी वैल्यू निकालेंगे, हम इस पर बिलीव नहीं करेंगे। D0/1 + ठीक है, तो 10 × 1 + 7% on 3%, 10 - 7%। ठीक है, वैल्यू निकालो, कंपेयर करो कि इज इट गुड टू बाय एट 340 और नॉट। देख लेते हैं क्या किया इसने। सी D0 1 + D Ke - D। D0 1 + D Ke - D 356। वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 356। 356 की चीज अगर 340 में मिल रही है, छट से ले लो। ये जो आपका गुड फ्रेंड था ये आपका लॉस करवाने वाला था। ठीक है, तो ऐसे मत सुना करो। Value of share is 356. Current market price 340. Therefore, Mr. Pandey is incorrect and
share is underpriced and you should definitely invest in such kind of share. Let's move on to the 9th question. Mr. Sunil has a required rate of return 16%. He has made investment in shares of ABC Limited using the Gordon's model. Okay, Gordon's model is this. ठीक है? Find out the value. EPS अगर मेरा 10 है and ROI is equal to 20% and retention ratio is 0%. We will do 0 and 60% वाले. ठीक है? Now, same. Value is equal to D0 1 plus D upon KE minus D. This is the formula that we have done till now, right? अब हम क्या करेंगे? रिटेंशन रेशियो क्या होती है कि लेट्स से कंपनी ने 20% पे अपना पैसा अर्न किया, राइट? नाउ इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल इट्स डिविडेंड, वो कुछ अपने पास भी बचा के रखती है पैसा. व्हाई? बिकॉज उसे कैपिटल की जरूरत होती है फॉर फर्दर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तुम्हें अगर इक्विटी शेयर होल्डर को सारा पैसा बांट देगी एज अ डिविडेंड, तो उसे फिर बोरो करना पड़ेगा, उसे फिर मतलब कैपिटल रेज करनी पड़ेगी. तो इंस्टेड ऑफ रेजिंग द कैपिटल वो क्या करती है, कुछ रिटेन करके रखती है. तो दैट इज द रिटेंशन रेशियो. ठीक है, तो D0 अपॉन 1 माइनस B KE minus BR. This becomes the formula in the Gordon's model, right? And B is nothing but this. ठीक है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं तो D0 क्या है? D0 is the earning per share. ठीक है, 10. This is the earning in form. ठीक है, that is you are earning 10 rupees on your share. 1 minus 0 upon 16 minus BR. B is your 0 into R is ROI, return on investment, that is 0.20. ठीक है, तो 10 into 1 plus 0, 16 minus 0.2 into 0. Okay, let's do the second part for the better understanding. D0 10, 1 minus 0.6 when B is equal to 60. KE क्या है मेरा? 16%. BR क्या है? B is 0.6, R is again 0.2. See, 100, 1 minus 60, 0.2 into 0.6. In this particular question, यहाँ पे इसका टाइपो एरर है. ठीक है, बिकॉज अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ D0 into 1 minus B upon KE minus BR, you can write D0 की जगह EPS. Okay, B is given as 40 and they have considered to be 60. This is a typo error. This question is over. Now the 10th question, we'll just cover it in the second video. Okay, I believe, okay, there are 19 questions total. We have done till here now. In the second part, I'll be covering the remaining questions. Okay, till then, do watch all the videos. Have a great day. All the best for examination. Bye.